outstanding contribution to social welfare, good corporate citizen, and lifetime achievement. So let us begin with the awards. I request Shri Birla to please come forward to honor the awardees in different categories, and the winner this year. CEO, FIA Technology Services Private Limited. The next category. Congratulations on the award, and the winner in the next category. Now coming to the final award category for this year, which is the Lifetime Achievement Award. For my chief guest, I would like to let you. Before I request Shri Birla ji for his address, may I announce the presentation of the Silver Salva to Shri Jagdeep, President PHDCCI, by Chief Guest Shri Birla ji, the Honorable Speaker of Lok Sabha. PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के 170 एनुअल कॉन्फ्रेंस में चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री साकेत डालमिया जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव अग्रवाल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव और कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ सांध्यानी जी, मैं आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक लंबे इतिहास, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन को देखा, फिर आजाद भारत को देखा और फिर बदलते भारत की तस्वीर को देखा। एक लंबा अनुभव, दीर्घकालीन सोच और किस तरीके से आपके प्रयासों से
भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए, उसके योगदान के लिए वर्तमान और भूतपूर्व सभी पदाधिकारियों को और चेंबर्स के 1,50,000 से ज्यादा मान्य सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने प्रयासों से देश के राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दिया। आज विशेष रूप से उन पुरस्कार विजेताओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, अन्य सेक्टरों के अंदर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कॉर्पोरेट के माध्यम से लोगों के रोजगार सृजन, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जिन इंडस्ट्री सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने अपना कंट्रीब्यूट किया, उन सबको आपने पुरस्कार दिया। और विशेष रूप से पुरस्कार की जूरी जो थी, दवा साहब और हमारे कोटा में जिनकी इंडस्ट्री है आलोक श्री राम जी, उन्होंने बताया कि हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किस किस तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नए इनोवेशन सेक्टर के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और उसमें से चयन करना एक कठिन काम है, लेकिन उन्होंने जो चयन किया उन सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनके गए प्रयासों से उनको कार्य करने की नई प्रेरणा मिलेगी और इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को भी नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, ताकि वह भी अपने अपने क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य, सेवाएं, इनोवेशन से आने वाले समय में पुरस्कार प्राप्त करें। हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विशेष रूप से 2047 जब आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, भारत के नए भारत के निर्माण का भारत के प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने नए भारत को बनाने के लिए 25 वर्ष के विजन से काम करने के लिए देश को दिशा देने का काम, 30 करोड़ जनता का उस लाल किले के मैदान से कि 2047 जब आजादी के 100 साल हो तो भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र, एक संकल्प के साथ, सिद्धि के साथ विजन और विजय के साथ संपूर्ण देश के लोगों को अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग विषयों पर काम करने वाले सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देना, ये परिपक्व नेतृत्व की निशानी है। हमने आजादी की 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने एक नई प्रगति की खुशहाली की। हमारी 75 साल की लोकतंत्र यात्रा निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण थी, क्यों आजादी के बाद जो भारत था उस भारत के अंदर हम किस तरीके से समाज के गरीब, वंचित, अभाव में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर सके और उसके साथ साथ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में साथ चलते हुए हमारी चुनौतियां गंभीर थी,
लेकिन उस गंभीर चुनौतियों के बाद भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, संवाद से, चर्चा से, सामूहिकता के साथ मिलकर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने काफी कुछ प्रगति की। लेकिन अब ये दशक है, इस दशक में एक नई दिशा देने का काम हमने किया, नए विजन के साथ काम करना और बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, नया रिसर्च और नए औद्योगिक विकास की ओर काम करना। ये बात सही है कि पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति में देश आजाद हो गया था, लेकिन चुनौतियां बहुत थी। लेकिन नई जो औद्योगिक क्रांति चौथी है, वो भारत के लिए आकांक्षाएं भरी हुई है। भारत की जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जहां सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की है, वहां दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका अद्भुत ज्ञान, उनकी नई सोच, नया विचार, तकनीक से पूर्ण रूप से परिपक्व हमारा नौजवान किस तरीके से दुनिया के अंदर नेतृत्व कर सकता है, इस चुनौतियों से भारत का नौजवान लड़ रहा है। और मुझे आशा है कि मैं दुनिया के जब देशों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है कि विकसित राष्ट्र के अंदर भी उस देश के अंदर चाहे तकनीकी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पेशेवर काम करने वाले लोग हों, दुनिया की बड़ी कंपनियों में नेतृत्व करने वाले हमारे नौजवान हों, वो भारत के लोग हैं, भारत के नौजवान हैं। इसलिए हमें गर्व होता है कि उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी अगर उस देश के अंदर योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। आने वाले समय के अंदर हम इन भारत के नौजवानों को हमारे बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी शिक्षा पॉलिसी जो नीति रही थी, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर कहीं न कहीं एक दौर था कि हम मस्तिष्क रूप से तो डेवलप कर रहे थे, लेकिन हम कई इनोवेशन, रिसर्च, विज्ञान के सेक्टर के अंदर हमारे जो विश्वविद्यालय थे वो कहीं न कहीं दिशा की ओर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब भारत में नई शिक्षा नीति के अंदर हमने इस दिशा की ओर काम करने की योजना बनाई। दुनिया के अधिकतर विकसित राष्ट्रों के अंदर जो वहां के विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस हैं, उसमें शिक्षा के साथ साथ रिसर्च, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उनके साथ संकट चलते गए। तो हर चुनौतियों का समाधान वहां के विश्वविद्यालयों में निकाला। लेकिन हमें गर्व है कि आज भारत के अंदर हमारे वही नौजवान जो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न और आज विश्व की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है, तो भारत के नौजवान निकाल रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो हमें रिसर्च, इनोवेशन में नई चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता देना होगा। हमें बदलती दुनिया के अंदर अब, क्योंकि तकनीकी ने कहीं न कहीं सारे विश्व को एक कर दिया, इसलिए किसी भी विश्व के अंदर जो भी वहां पर राजनीतिक, सामाजिक
विज्ञान के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसका प्रभाव कहीं न कहीं सभी देशों के अंदर पड़ता है और इसीलिए बदलती परिस्थितियों के अंदर भारत ने इस दिशा की ओर काम करने शुरू किया है कि हम हर सॉल्यूशन का हल भारत में निकाले, हर चुनौतियों का समाधान भारत में निकाले। और हमने इस नए बदलते परिप्रेक्ष्य में देखा है कि विश्व कोविड महामारी के समय किसी समय में जितने भी वैक्सीनेशन होते थे कि दुनिया के विकसित राष्ट्रों के रिसर्च और इनोवेशन के परिणाम निकल कर आते थे, लेकिन हमने इस कोविड की चुनौतियों के अंदर हमारा वैक्सीनेशन बनाया, हमने हमारी दवाइयां बनाई और हमारा वैक्सीनेशन ऐसा नहीं कि भारत के अंदर विश्वास का, दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर भारत की वैक्सीनेशन की मांग रही और उसकी विशेषता रही। ये भारत के लोग हैं। मुझे अभी बताया कि पीएचडी ने किस तरीके से नए रिसर्च सेंटरों को बनाने का काम किया है। सभी इंडस्ट्री सेक्टरों ने मिलकर सामूहिकता के साथ कि हम किस तरीके से हमारे चैम्बरों के अंदर एक सामूहिकता के साथ नए रिसर्च, नए इनोवेशन, नए बदलती परिस्थिति के अंदर जो दुनिया की बेहतरीन तकनीकी है उस तकनीकी का उपयोग हम करें कि अंदर भी और भारत के बाहर भी मेक इन इंडिया की प्रमाणिकता, विशिष्टता हो और वह सब आप लोगों को करना है, आप लोगों पर जिम्मेदारी है। देशों के अंदर हम हमारी दवाएं सप्लाई करने का एक बड़ा मैन्युफैक्चर हब भारत को बना रहे हैं। चाहे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चले जाए, में अफ्रीका के जितने भी कंट्री के स्पीकर थे उन्होंने एक मत से कहा कि भारत की दवा प्रमाणिकता, विशिष्टता, सस्ती है, यह हमारी ताकत बनती जा रही है। उस एग्रीकल्चर सेक्टर के इक्विपमेंट भी भारत बड़ा हब बनता जा रहा है। 70%, 80% इंपोर्ट करता था, आज भारत अपनी आवश्यकताओं को 70-80% पूरा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यों के अंदर भी जो मनोभाव परिवर्तन हुआ है कि अगर हमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करना है तो हमें इंडस्ट्री और सेक्टर, सभी सेक्टर को ग्रोथ करना पड़ेगा, उनको यहाँ स्थापित करना पड़ेगा और इसलिए राज्यों में भी अब प्रतिस्पर्धा है। इंडस्ट्री लगाने आने वाली परेशानियों और तकलीफों को कम करने का काम है, सोल्यूशन देने का काम है और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण हर राज्य अपने यहाँ इन्वेस्टर एक्सपो करता है, बुलाता है इंडस्ट्री सेक्टर को, लोगों को बुलाता है कि हमारी नीतियां, पॉलिसी अच्छी है। ये प्रतिस्पर्धा संघीय ढांचे के अंदर बहुत अच्छी है और इसके बेहतर परिणाम आने वाले समय के अंदर आएंगे। इसलिए बदलती दुनिया के अंदर आपने जो विषय रखा है वो विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2047 के अंदर अभी मुझे लगता है कि कुछ सेक्टरों के अंदर ही हम एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हमें और दुनिया के अंदर दुनिया की भारत की आवश्यकताएं और भारत के साथ दुनिया की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे चेंबर में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हम किस किस सेक्टर के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया किस तरह बदलती परिस्थिति में दुनिया के अंदर किस तरीके की जरूरत वस्तुएं या सेवाओं की पड़ेगी, उसके आधार पर हम प्लान बनाए, योजनाएं बनाए और एक रोड मैप बनाएंगे तो दुनिया टेक्नोलॉजी, विज्ञान और रिसर्च में भारत अपनी एक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो रही है। केवल हमारी कार्य कुशलता को बेहतर करने की आवश्यकता है और इसलिए आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम हमारे जो निकलने वाले नौजवान हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, वह भारत के अंदर काम करें, उनको हम उचित प्लेटफॉर्म दें, उनको रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म दें, इक्विपमेंट दें, संसाधन दें और चुनौतियों के बारे में जानकारी दें। तो हम अगर इस सेक्टर के अंदर तमाम सेक्टरों के भविष्य को देखते हुए भारत की आवश्यकता और विश्व की आवश्यकताओं पर
हम काम करने लगेंगे तो हम एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बना पाएंगे, मैन्युफैक्चर बना पाएंगे और उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर भी हम काम करेंगे। लेकिन जितना मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रीज का काम है उतना ही आज बड़ा सेक्टर सर्विस का सेक्टर भी बहुत बड़ा बनता जा रहा है। इसलिए हमें दोनों सेक्टरों पर काम करने की आवश्यकता है और मुझे आशा है इस दिशा के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज बेहतरीन परिणाम है। आपने सोच बनाई, विचार बनाई 2047 की एक लंबी कार्य योजना पर आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब बनेंगे, क्योंकि दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत में आकर्षण करने की क्षमता है और जितने बदलते परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक रूप से परिप्रेक्ष्य में जो बदलते भारत की तस्वीर है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े हब के रूप के आज भारत बेहतरीन डेस्टिनेशन भारत दुनिया को दिखता है और ये हमारे लिए एक अवसर है कि इस अवसर का लाभ उठाकर हम किस तरीके से एक नई सोच के साथ काम करने का काम कर सके। इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर आप चले जाए कि आज हमारा मेडिकल का सेक्टर ले लें, मेडिकल टूरिज्म ले लें। आज अरब देश से लेकर आसपास के जितने भी देश के लोग हैं, वो सारे देश के लोग यहाँ पर इलाज कराने आए। अगर हम इस मेडिकल टूरिज्म को भी डेवलप कर दें तो हमारे यहाँ सबसे सस्ता इलाज, विशिष्टता का इलाज, प्रमाणिकता का इलाज दुनिया में कहीं इससे बढ़िया चिकित्सा बेहतरीन सुविधा नहीं है। केवल उस चिकित्सा व्यवस्था के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते जा रहे हैं और इसलिए चाहे हम मेडिकल टूरिज्म ले लें और भारत की विविधताएं और विविधताओं की हमारी ताकत, हमारे पर्यटन के क्षेत्र को, जितने पर्यटन की संभावनाएं भारत में है, दुनिया में उतनी संभावनाएं कहीं नहीं। इसलिए हमारे भारत के अलग अलग सेक्टरों को हम किस तरीके से दुनिया को बता सकें कि भारत में जितनी विविधताएं हैं उतनी हमारी ताकत सामर्थ्य सकती है। और उस सबसे मैं कह सकता हूं कि टूरिज्म, पर्यटन और जो सबसे बदलते परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में तो आज भी हम नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले समय में और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई टेक्निक का अधिकतम प्रयोग करें, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, टेक्निकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उत्कृष्ट शिक्षा के साथ उनको इनोवेशन रिसर्च करने के संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वो एक बेहतरीन परिणाम दे सके। मुझे आशा है कि आप सब ने जो जिस विजन से आपने काम करने का संकल्प लिया है, जो आत्मविश्वास आप में है, ये संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, कठोर परिश्रम, मेहनत, ये निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है तो वो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का रहता है। क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर के अंदर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हों, जिसके अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री से आपने बड़े सॉल्यूशन देने का काम किया है। मुझे आशा है कि जिस तरीके से हमारा एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, आने वाले समय के अंदर सारी दुनिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर हमारे सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हब बनेगा। चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मशीनरी के अंदर ले लो, कोई सेक्टर नहीं, दुनिया के अंदर हम ही सबसे आगे रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। हम ही बदलते परिप्रेक्ष्य में दुनिया को हर चुनौतियों का समाधान देने की ताकत भारत में है। इसी संकल्प के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जो विजन आपने रखा है इसके लिए मैं आपको सदिल से साधुवाद देता हूँ। भारत का लोकतंत्र, भारत की संसद आपके इन प्रयासों में आपके साथ है। जो कुछ भी आपकी कठिनाई या समस्या होगी उनको संसद में चर्चा होगा, संवाद होगा,
और बेस्ट चर्चा और संवाद से हम अच्छा समाधान निकाल सकें। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने हर चुनौतियों का समाधान चर्चा और संवाद से निकाला है, और चर्चा संवाद से जो मंथन से जो अमृत निकलता है उससे समाज का कल्याण होता है। हम सब समाज के कल्याण के लिए गए। हमारा सबका प्रयास है लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, और आर्थिक रूप से और बेहतरीन जिंदगी का अगर कोई काम कर सकता है तो वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लोगों के कारण हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। से आग्रह करना चाहूंगी, एक खास आग्रह ये है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑनर मॉडर्न भारत। सो मे आई रिक्वेस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज, और श्री ओम बिरला जी ने आपसे आग्रह करूंगी आप उन्हें फेलिसिटेट करें, ऑनर करें। Good afternoon, everybody. Respected Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Jagdeep ji, our dear President, Shri Sanjeev Agarwal ji, our dear Vice President, SG, our dear SG Mr. Saurabh Sanyal, His Excellency Om Birla ji as a chief guest of this session. I'm sure we are all delighted to hear his vision and thank him to share the same. I think all the awardees, जितने लोगों को भी यहाँ पर आज पुरस्कार मिला है, I think वो जिंदगी भर इसको याद करेंगे. And I envy the president to get a lifetime award from Om Birla. Thank you so much, sir, for doing this. Sir, कहते हैं कि जो स्पीकर ऑफ लोक सभा होता है, उसका जो कार्य होता है वो बड़ा मेजर होता है. अंग्रेजी में तो उसको मेजर कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे नाप तोल करके उसको काम करना होता है. लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टेट और एकदम हार्ड रहना पड़ता है, इससे से होना पड़ता है. सर, आपका जो विजन सुना, उससे ये मन में ये भाव हुई कि इंसान को मौके नहीं मिलते लाइफ में, और स्पीकर ऑफ द हाउस का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इतने सारे जो इशू होते हैं एक कंट्री के अंदर, किसको मौका दिया जाए. जब आपसे आपकी जो सोच सुनी तो आई रियलाइज कि योर डेडिकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तो इतना कठिन जॉब होगा शायद सर आपके लिए टू डिसाइड कि व्हाट शुड प्रायोरिटाइज द नेशन टुडे. So thank you so much, sir, to prioritize the most important thing in India, that is to spread education, equality, growth for all. हमारा जो आज PhD चैम्बर है, it has 150,000 members, mostly MSMEs. So इस कार्य को हम आगे बढ़ाने में सर हम पूरा गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे, और हम वेट करेंगे आपके डायरेक्शन का to take this job forward. और जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी फॉर नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट एनीमोर, इट शुड गो वन स्टेप फर्दर फॉर इनोवेशन. आज इंडिया वाज रैंक्ड 40th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड. तो आई एम श्योर ये सोच अगर नहीं होता तो इस बात पर हम पहुंचते नहीं, और आशा करते हैं और आगे बढ़ने का आपके सहयोग से, और आपको हेल्प करने के लिए सर हम एवर रेडी हैं. थैंक यू सो मच सर वंस मोर फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग द ओकेजन. लोगों को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, जिन लोगों को भी सम्मानित किया गया है अलग अलग कैटेगरी में. प्लीज कम अप ऑन स्टेज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ. Also the jury members. The jury members, please come up on stage for a picture. नीदरलैंड में आपकी साइकिल ले जानी चाहिए. थोड़ा पीछे हो, थोड़ा किसी साइकिल नया रिसर्च क्या हुआ? साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल भी आप ला रहे हैं? आई थिंक इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक आपको
अच्छी साइकिल गियर वाली साइकिल मेरे पास है अच्छा कार रैली में बहुत टाइम हो गया आगे अब करते हैं कार रैली के आयोजक भी होते हैं उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री ओम बिरला जी, आपने समय दिया आज के लिए और अपने विचार हमारे सबके साथ या मौजूद तमाम लोगों के साथ आ जाएगा सर और आप तमाम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा अगला सेशन जो है वो मौजूद होंगे श्री पीयूष गोयल जी, Honorable Minister for Commerce and Industry. So we are just about to begin the next session. Next community session is post-pandemic world, the way ahead. आप ही डाल रहे हो जी जी सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम सर। कैसे हैं सर आप? ऑलवेज क्या कर रहे हैं आजकल आगे फाइनेंस के लिए शेयर मार्केट अरे सर speaker. अच्छा Since then I have seen you, your work and your progress. Very intimidated also and very respected by वो सॉरी I welcome back everyone inside the hall and I would like to request everyone to please take your India Growth story. कैसे हैं सर सो नाइस हमारे सिटी में Shri from the Ayush industry to come up on stage and present the shot to the Honorable Minister. अब इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ये सेशन जो बात करेगा एक नई दुनिया के बारे में। Respected Shri Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Government of India, Shri Saket Dalmia, Senior Vice President, PHD Chambers, Shri Sanjeev Agarwal, Vice President, PHD Chamber, Shri Saurabh Sanyal, Secretary General, former Presidents, members of PHD Managing Committee, distinguished guests, representatives from the media. A very good afternoon to everyone. I welcome you all to this very important session concerning with our economy on braving a new post-pandemic world, the way ahead for India growth story. We are privileged to have amongst us Shri Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Government of India. It is indeed my honor to welcome and extend my sincere gratitude to the Honorable Minister for spending his valuable time to address the gathering here today. Honorable Minister, you have brought the highest possible diplomatic and technical experience into the Union Cabinet and displayed maximum efficiency in accelerating India's exports, launched a conducive logistics policy, and helped in fostering a favorable environment in the country. During your tenure, sir, India has achieved its highest ever exports of about US $675 billion in 21-22. So you have been instrumental in the signing of a free trade agreement with UAE, the fastest ever negotiated FTA globally, and the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, India's first agreement with a developed country after a decade. So you oversaw the launch of production-linked incentive (PLI) schemes to bring manufacturing at the center stage and emphasize its significance in driving growth and creating jobs. So your achievements are indeed skyrocketing, setting an exemplary performance for everyone. We are living in exciting times with India playing a key leadership role, guiding the world into the fourth industrial revolution
4.0. More than 2 years of the pandemic and much global tension, India stands on the hill of massive economic integration across the globe, having aptly earned the title of one of the fastest growing world economies. Given the current global volatility, I applaud the government for handling any crisis that came, be it COVID-19 with the massive vaccination drives rolled out at an extremely fast pace, sending vaccines and medicines around the world, or handling the global economic headwinds. The country's long-term GDP has become more stable, diversified and resilient, and is expected to grow at more than 7% in the coming years. India seeks to become a high middle-income country by 2030, well before the centenary of its independence. The post-pandemic world will facilitate growth and innovation for consumer businesses, both Indian and global, established and emerging. The transformations in the Indian consumer's income, propensity for consumption, awareness and tech savviness will create massive business opportunities. Healthcare, education, Ayush and pharma, automobiles, power and transportation. Reforming agriculture and creating high growth and high value services industries is a key. But a large part of India's future lies in its ability to rapidly industrialize and become a global manufacturing hub. However, this requires the government to foster a genuine system of enterprise with a level playing field in terms of access to capital for trade and industry would be crucial. Further, it has become important for India to take strong strides in manufacturing with an effective ease of doing business environment. Here it is heartening to note that the Department of Commerce plans to set up a dedicated trade promotion body towards achieving the goal of $2 trillion. Trade arrangement methodology should be completely aligned with the domestic market need. It is critical that we strengthen the safeguard provisions in both existing and new FTAs under review to protect domestic businesses. Further, to contribute to India's trade resilience, a services trade agreement among friendly nations of the Indo-Pacific region is also aimed by way of liberalizing domestic regulations and building capacities in sectors like tea and a significant trade deficit. It requires policies which provide a fillip to employment-intensive manufacturing and create an equitable trade balance with the world. Discussion of India's growth story is incomplete without mentioning the pivotal role of startups in defining future technologies and India's rise to an advanced economy. India is at the cusp of addressing certain challenges like energy conservation, decarbonization, self-reliance on alternative energy fuels, at the same time sustaining growth that is both resource efficient and thus carbon intensive. Also, given the ongoing geopolitical uncertainty, the time is right for India to build its self-reliance in the energy sector, in the fields of solar energy, wind energy, and various other renewable energy sources like hydrogen, biofuel, and electric vehicles. To fulfill the aspiration of India's commitment of net zero emission by 2070 requires a collective approach to phase down the use of fossil fuel and increase the share of renewable energy capacity. Friends, I mentioned that PHD Chamber has been meeting Honorable Commerce Minister on a regular basis, and whenever we have given him any suggestions, he has actively noted them and referred us to the relevant officials, and especially on ease of doing business. Honorable Piyush Goyal is working very, very actively, and we are really grateful to him for his outstanding steps which is taking place. And on that note, I would like to request our Chief Guest, Shri Piyush Goyal. Thank you very much, Madam. Mr. Jagdeep Multani, Mr. Dalmia, Mr. Agarwal, Mr. Sanyal, Excellencies, former Presidents of the PhD Chamber of Commerce and Industry, members of the Managing Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving me this opportunity to interact with so many friends who I see before me at this very important 117th annual
meet that PhD Chamber of Commerce and Industry is, I would say, celebrating today. You've had very illustrious speakers before me and have set the tone for discussions amongst like-minded friends to see where India will be in the Amrit Kal going forward to the 100th year of independence in 2047, and how a strong, resilient, self-confident, self-reliant India can play an important role in our ambition to become a developed country by 2047. Pradeep, at the outset, I'd like to compliment you for your leadership of the PhD Chamber through the presidency. You've really done some wonderful work in the midst of challenges. COVID period has given us a lot of opportunities to interact, many times on video conferencing. And I've always found in you a very sensitive person, willing to engage, willing to think out of the box, and giving good leadership to your country. I wish you well, and I would only request that you continue to be engaged with the members, with the affairs of the chamber, just as I would urge all the other presidents, past presidents, that while we do a lot of work while we are presidents, very often post-presidency, and that has been the bane of several very well-meaning, very prominent associations whose leadership over a period of time has stopped taking interest in their affairs. And I suspect gradually they are getting relegated. Something which I would not like to happen with PhD Chamber, because I believe you are one chamber. While you may have started as Punjab, Haryana, Delhi Chamber, today you have a pretty much a national outlook. You have a very large to play when it comes to nation building, when it comes to the affairs of business, industry, government, and the interface between government and businesses. And we have almost looked upon you as a national chamber in all our engagements, in all our appointments, in all the various committees where we take different representatives of industry. And therefore, while that's not what you called me here to hear, but I do believe it would be nice if all of you can, all the ex-presidents that I see seated around me in the front row, can play a significant role in continuing to strengthen this organization, giving it leadership, and grooming the young leaders like Saket and others after him who will take over. And I'm glad that the young blood is coming in a bigger way, they're coming in with leadership roles. Saket, I wish you well, as you may be aware, and many in this room are. Our doors are always open. We wish to engage as much as industry is willing. I recall in the midst of COVID, there was a stage when I had to back off from the VCs because I thought probably I'm doing too many engagements with EPCs and industry associations. And I got the impression that there was a fatigue setting in amongst you, not me. Where business wants the government's support, where what kind of a facilitative role we can play. And I do hope that your chamber and the government will continue to engage with a great degree of positivity and an outlook for the future, which is truly one taking India to much, much higher levels of prosperity, making India a developed nation, making India a high-income company in the years to come. And that cannot happen without the active contribution of each one of you with a sense of duty as articulated by Honorable Prime Minister Narendra Modi on 15th August when we were celebrating 75 years of independence, and also
preparing the nation for the next 25 years of Amrit Kal. The 5 commitments, the 5 vows that in a way he asks each one of us to take can be a guiding principle, can be a force multiplier for each one of us. And I do believe some of the thoughts that he articulated, whether they relate to our ambitions to become a developed country, whether they relate to the unity and integrity and the oneness that this nation needs to demonstrate to the world, whether it relates to our effort to get out of the colonial mindset that sadly has held us back over the years in many different ways, including some of the systems that were left behind by the British 75 years ago, which continue to, I don't know if it's a good word to use, but haunt us and continue to bother businesses from flourishing, continue to hold back entrepreneurship, hold back the true potential of many of our young boys and girls. I think it's very important that we all engage collectively with a sense of duty, as mentioned by the Honorable Prime Minister, and work to remove even the slightest trace of the old mindset, of the old colonial history that we have inherited, and work collectively towards a bright future for our nation. And I would urge industry participants, industry leaders to take this message we faced for many years and be bold in our outlook for the future. In fact, very recently I was reading Mr. Deepak Parikh's comment, and I'm sure all of us are very familiar with him and respect him as one of the tallest leaders of Indian industry, banking. And if I may quote what he said, I think that is the optimism, that is the confidence which we in business need to imbibe, which we need to pass on to the youngsters in this room and our next generation, our inheritors of the rich legacy that India carries. We looked at a very holistic, broad-based, consensus-based development model across sectors, across businesses, across the country. It is not for no ordinary reason that only yesterday India achieved one more milestone when we were ranked 40th in the Global Innovation Index by the World Intellectual Property Organization. And mind you, only 7 years back in 2015, soon after we had inherited government, I would not say inherited, when with your blessings and your support, the support of the people of India, we were given an opportunity to serve the nation. Because at least in our party there's no inheritance. You have to work your way through. You don't get a position just because of a surname or because of a family legacy. But truly, from a 81st position in 2015 to the 40th rank in 2023. It's been a wonderful journey, a journey which would not have been possible but for the partnership between all of you and the government. It would not have been possible without your very candid feedback that we keep receiving from time to time, without the significant engagement and support that we receive from business leaders. And it is this partnership that will define the future of India. Yojana, which almost doubles down the food grain eligibility for the poor to help them tide over the challenging times that we have lived through in the last 2.5 years. What with the worst pandemic the world has ever seen hitting us in February, March 2020. And as we were almost getting out of it, the world literally getting into a catastrophic situation in terms of conflict in our very near neighborhood,
leading to an economic recession across the world, leading to inflation, leading to disturbances in the financial architecture of the world, many of which India has been able to relatively still continue to be a bright star or a shining star in the world. We continue to be one of the fastest growing large economies. We continue to have reined in our inflation numbers pretty significantly low compared to the rest of the world. Yesterday I was told Germany has reached 11%. A nation which was usually at 1.5% is at 11% with cash shortages, with serious consequences on their financial systems. Whereas we in India, who almost till 2014 would look at a double-digit inflation as if it was a given, and were used to grappling with 8, 9, 10% as a norm, are even today at only 7% inflation compared to the rest of the world. Our neighbors' actions, but we continue to relentlessly pursue that agenda in the government. So we continue to do our state rankings. We continue to look at our internal processes. We are very focused on decriminalizing sections of law which have been harassing businesses. We do not believe that businesses should be working under any pressure, but should be allowed to flourish and work with the confidence of a collaborative government-business interface. And we continue to work towards reducing the compliance burden on our businesses. I would urge the Chamber and all of you distinguished ladies and gentlemen to please give us feedback and literally give it to us quickly, because in the winter session we are proposing to come out with about 30,000 actions across the country to either eliminate or reduce the compliance burden of business. We wish to do much more. We have already decriminalized several laws like the Companies Act, many sections of the Companies Act. Similarly, we are working on many other laws currently, and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under me is spearheading this in consultation with other ministries. I would urge business and chambers to kindly give us a feedback where you would like us to further reduce the compliances, where you would like us to decriminalize any sections which are in terms of focus on business rather than defocus through compliance work. We have launched the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan. It's an infrastructure marvel, if I may venture to say so. I don't know how many of you have really been able to understand what PM Gati Shakti is. I can spend some time to explain it, but I know you have other speakers after me. But I would urge you to invite our team from PM Gati Shakti National Infrastructure Master Plan to come and present to all your members, probably on a hybrid mode, so that people across the country who are associated with PhD Chamber can also benefit from an understanding of how this government is leveraging technology to create world-class quality infrastructure within stipulated costs, within defined timelines, without cost overrun, so that we can serve the people of India, put effectively good use to the money that each one of you pays in taxes or any of the other collections that the government has, and how we see the infrastructure story providing huge opportunities for all of you in your chosen businesses. We have also introduced a production-linked incentive, which I hope is helping Indian manufacturing come of age, expand capacities, become global in terms of scale and size, and get the advantages, the competitive edge that will help us compete with the rest of the world. The open network for digital commerce and the intention behind it, and help our young startups, our young entrepreneurs, particularly those in remote areas,
help the small mom and pop stores, the small corner stores also get digitized, get the benefit of e-commerce. I think it can be a great service to our small storekeepers, retail stores, as well as provide huge business opportunities for young startups wanting to engage in this field. There are many areas. You mentioned about exports. We have a $2 trillion export target by 2030, $1 trillion in services, $1 trillion in goods, which will mean that services will have to grow at about 19% CAGR for the next 8 years. Goods will have to grow at about 12% CAGR for the next 8 years, and we can look at a $2 trillion by 2030, which will be a landmark achievement. And I would urge. Yesterday I had a call with my Canadian counterpart, and last week I met with her in Bali and did one round of FTA negotiations in Bali, in a third country. I'm only sharing this with you to tell you we mean business for the business in India. How the world is really under serious recession, but India is on a path of progress, and India is now engaging with the rest of the world from a position of strength. You also outlined, yes. I'm sorry, I did not realize he has come. I think we need to give a standing ovation to all our colleagues who are keeping us safe, who are keeping our borders secure, and great together. Shri Senior Vice President, PHDCCI, for his vote of thanks. Shri Piyush, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Government of India, our dear President, Vice President, Secretary General, Excellencies, former Presidents, thank you so much everybody for being here. Sir, as I said, I have had the privilege of interacting with you on several occasions. At every occasion, I have been more surprised than ever before. His constant burst of energy to always give a patient listening to the concern at hand is remarkable. And you come out after meeting him, wishing and wanting to do more. I'm sure today as well, adjusting the same industry needs for competitiveness. This and endless problem solving helping guiding. No wonder then, our industry exports GDP are at their highest in the history of India. And to top it all, the 40th most innovative economy was mentioned today. What more can one ask for? Sir, your statesmanship to tackle the geopolitical crisis in Europe in favor of India is perhaps a masterstroke to be in the history books of India as a turning point in India's global economy, global economic strategy based on. A big applause to that, sir, for all of us. We all know that your contribution to India's nation building in every sense is substantial, and mentioning them all today would be impossible. All I can say, sir, is that we are lucky and look forward to your continued support to our nation's middle market companies, that is small and medium enterprise, which constitute the bedrock of our chamber as well. We in turn will do our best to fulfill the joint dreams of every citizen. The national single window usage feedback will definitely be there, and we will ensure through the 16 states in which you are physically present to enforce digitization at the Kirana level, sir. We will do our best. Thank you so much, sir, for being here. So close, sir. It's an honor. Really proud of all the good work. Excited to participate in the 117th annual session. A very appropriate theme. We are living in challenging times, but in this post-pandemic world, I think the India growth story remains intact, is robust, and is a role model for the rest of the world. Prime Minister Narendra Modi's leadership has taken India to great heights.
something we celebrated once again yesterday when India was ranked 40th in the Global Innovation Index by the World Intellectual Property Organization. A huge jump from 2015 when we were 81st ranked. In the last 7 years, consistent efforts towards ease of doing business, towards promoting innovation, and towards supporting businesses through an industry, academia, government partnership to promote innovation has been the hallmark of our efforts, along with easing the patent regime and the intellectual property rights ecosystem. In fact, I am indeed proud that this nation today provides the world with manpower, with talent, with skills which are unmatched. And therefore, we have the greatest opportunity before us in the next 25 years as we embark on India's Amrit Kal to truly become the force multiplier of the world economy, to lead the world's growth and become a prosperous nation, a developed nation, as Honorable Prime Minister Narendra Modi articulated on 15th August. The country stands solidly behind him. Business, government, and the people of India, with their collective effort and with the spirit of duty, will take India to greater heights in the years to come. I am grateful for the very positive and useful contribution that the PhD Chamber has always made and continues to make. I compliment Dr. Multani for his leadership, and I wish Saket Dalmia well for his presidency. Thank you. The vision of our Honorable Prime Minister for Make in India and Atmanirbhar Bharat, and addressing the issues and concerns of the industry through policy documents and interactive sessions with of all stakeholders of the Indian defence industry and underlying opportunities for the Indian defence industry. To take this momentum further in policy space and celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on 75th year of India's independence and the glorious journey, PHDCCI proudly dedicates the deliberation of the annual session 2022 to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi's clarion call of Atmanirbhar Bharat that aims to foster the local entrepreneurial ecosystem and export potential in India. While relying on self-reliance for realizing its own actual potential, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is not aimed to lessen India's deep engagement with the rest of the world. In fact, the mission is clearly aimed to open the world of opportunities from and for India. Since time immemorial, India has kept a distinction of never opting for isolation from the world. The Indian defence sector has come of age with a refreshing policy. Several initiatives of the government to indigenize and encourage innovation in the sectors. There were huge opportunities for SMEs. The unit should look at not just producing for Indian needs, but also explore export opportunities. Global OEMs are open to sourcing from India. The aerospace and defence industry is of strategic importance to any nation. The Ministry of Defence acknowledges the fact that India needs to increase self-reliance in its own national interest. On the other hand, the international defence industry today is global in nature with a complex network of global supply chains. Therefore, it is imperative for Indian companies, especially SMEs and startups, to integrate themselves into the supply chains of national and international defence majors in order to reduce dependence on foreign supplies. Vice President, Shri, His Excellencies, respected former presidents, and all dignitaries, thank you so much for this amazing session. On behalf of the PhD Chamber of Commerce and Industry and myself, it gives us great pleasure to propose a vote of thanks to Shri Rajnath Singh Ji. Sir, I wish that you were here physically because I know that you are a big propagator for the PhD Chamber of Commerce for several years now. Thank you, sir, for recognizing us as one of the oldest chambers contributing to nation building. We will continue to propagate this effort of building defence self-reliance, and definitely we will reach out and connect to the world and the stakeholders and make your dream of make for the world come true, especially by focusing more on research and development instead of simply doing a technology transfer.
Dr. Adrian Hack, Director CAS, thank you so much for highlighting the strategic shift and the vacuum created by Russia, the golden opportunity for India to be the third largest arms manufacturer in the world. I must admit, sir, I am enticed myself to indulge. We will take this message to all our members. After which we are breaking for the lunch. So enjoy the lunch and we shall meet for the next session after that.